Carol E. Heim, and I can tell you that ये जो मैंने course बनाया तो a lot of it is influenced by what she has done with one of her courses. So let's begin by looking at what she talks about. In this particular reading, आपने देखा होगा कि ये एक डिक्शनरी है किस्म की, और इस डिक्शनरी में कई टर्म्स हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं और डिस्क्राइब की गई हैं और डिफ़ाइन की गई हैं. एंड दैट ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी यूज़फुल बिकॉज अक्सर हम टर्म्स को कंफ्यूज कर जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इनकी मतलब क्या है, और लिहाजा हम उनको गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर हमारा एनालिसिस भी गलत हो जाता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इस कोर्स के हवाले से है, वो है कैपिटलिज्म. What is it? Capitalism is an economic system dedicated to production for profit and to the accumulation of value by private business firms. Sounds like something out of an economics textbook, and pretty much that's a pretty good definition of capitalism as far as I'm concerned. In the fully developed form of industrial capitalism, firms advance money to hire wage laborers and to buy means of production such as machinery and raw materials. So दो चीज़ें आ गई आपके पास कि एक तरफ आप means of production खरीदते हैं, दूसरी तरफ आप क्या खरीदते हैं? वेज लेबर खरीदते हैं. उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और जब इस तरह से पैदावार होती है कि आप वेज लेबर को ख़रीदें और आप रॉ मटेरियल्स मशीनरी वगैरह ख़रीदें, उनको कंबाइन करें और प्रोडक्शन करें, तो उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है. नाउ दैट मीन्स ऑफ कोर्स दैट कैपिटलिज्म इज समथिंग क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम जस्ट मार्केट्स. We get very confused about capitalism because the way it's colloquially used, the way it's used on the internet, is very different from the way in which political economy uses the term capitalism, or any economist really uses the term capitalism. तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो भी कैपिटलिस्ट, बस दैट्स व्हाट कैपिटलिज्म इज. खरीदो फरोख्त is capitalism. But markets have existed for a long time. Here's a beautiful picture of an ancient market somewhere in Arabia, as you can see. And markets have existed for a very long time, somewhere in the Middle East, let's say. They've existed for a very long time. But capitalism hasn't existed for that longer time. Markets have existed for much longer than capitalism. Capitalism is not identical with markets, money, or greed as a motivation for human action. तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, सर अगर मैं किसी से कह दूं कि वो मुझे बुला रहे हैं कि लाल बैंड की परफॉर्मेंस, और मैं उनसे कह दूं यार ये पैसे कम है, मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो. या मैं ये कह दूं कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, गेस्ट लेक्चर कर रहा हूँ या दूसरा लेक्चर कर रहा हूँ, मैं कहूँ मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो वो मुझे कहते हैं हो तुम तो बड़े कैपिटलिस्ट हो गए हो, मेरा तो ख्याल था तुम सोशलिस्ट हो. तो दिस इज़ नॉट कैपिटलिज्म, ये गलत डेफिनेशन है. या कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप तो गाड़ी चलाते हैं और आपके पास तो मैक है और आपके पास आईपैड है और आपके पास फ़ोन भी अच्छा है, तो ये तो बड़े आप कैपिटलिस्ट हैं. ये भी कैपिटलिज्म नहीं है. ये सब चीज़ें जो हैं दर हकीकत गलत डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म. या कोई अगर ये कहे कि जी फलाना बंदा ग्रीडी हो रहा है कि हम पिज़्ज़ा इकट्ठे मिलकर खा रहे हैं और मैं एक स्लाइस एक्स्ट्रा खा लूँ और आके हो तुम तो बड़े कैपिटलिस्ट हो गए हो, ठीक है, ये भी गलत है. पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है. ये सब डेफिनेशंस गलत हैं कैपिटलिज्म की. कैपिटलिज्म इज़ नॉट, डजंट मीन एवरीबडी हु इज ग्रीडी इज़ अ कैपिटलिस्ट. दिस इज एक मजदूर है, ठीक है, फ़र्ज़ करो कि वो ग्रीडी हो गया किसी हवाले से, तो क्या वो कैपिटलिस्ट हो गया? दैट्स absurd and absolutely wrong. We know in society that just because a working class person becomes a little, let's say, selfish or greedy about something, that he hasn't become a capitalist, he hasn't become part of the capitalist class as such. So that's not the definition of capitalism at all. Similarly, if buying commodities is the definition of capitalism, i.e. owning a car or a phone or an iPad or whatnot, so, well, in the West, of course, these things are also owned by working class people. So are they also all capitalists? Of course not, right? They are not capitalists, they're workers. So that again is the incorrect definition of capitalism. The question is, how did you earn the money to buy the thing that you did? I'll just come back to you. So neither greed, nor markets, nor consumption defines capitalism. What then defines capitalism? All of these things predate industrial capitalism. Markets भी exist करती आई हैं, greed भी होती थी हमेशा ही सही, किसी ना किसी की selflessness भी है, greed भी है, पैसा भी बड़ा की भी अपनी एक तारीख है, पुरानी तारीख है. But all of this is not capitalism. So what is capitalism? Let's come to that. Capitalism, we can see, has three major forms, and when we talk about capitalism, we talk about the third form, which is industrial capitalism. So two of the forms are what are referred to as antediluvian forms of capitalism. Antediluvian, this is a biblical term to mean ancient ya purana ya pre-capitalist forms of capital. What? Pre-capitalist forms of capital. What are those pre-capitalist forms of capital? Merchant capital is one example. Ke buying and selling, tijarat karna, is an example of pre-capitalist forms of capital. The money with which you just buy and sell. You're not producing anything. You're just buying and selling
That is an example of merchant capitalism. इसी तरह there is interest bearing capital which has existed for a long time, जिसको हम बनिया कहते हैं, या जिसको हम यूजरर कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं सूदखोर कहते हैं, रिबा कहते हैं, ये बड़ी अरसे से एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो क्या ये कैपिटलिज्म है? Not really, not precisely. It has that also has existed for a long time in history, much before the rise of capitalism as an economic system. Capitalism as an economic system is what we refer to as industrial capitalism, which is what our focus is. We want to understand industrial capitalism, not the antediluvian forms of capitalism. So industrial capitalism, when the capacity to labor is transformed into a commodity, that is labor power, that's where capitalism begins. Let me explain this concept. When I am able to buy someone's labor power on the market, I am able to employ them. Employment का concept जो है, ये capitalism है. अब आप बड़े हैरान होंगे, आप कहेंगे सर employment तो हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी, but it's not the case. Actually जो slave है for example, वो employee तो नहीं है, वो तो गुलाम है. किसी ने खरीदा है तो एक ही दफ़ा खरीदा है, और ख़रीदा है तो उसकी कैपेसिटी टू लेबर नहीं खरीदी, उसको होल बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट खरीद लिया है. अब वो उसके साथ जो मर्ज़ी करे, जैसे अगर मैं एक जानवर ख़रीद लूँ तो जानवर के साथ मैं जो मर्ज़ी करूँ, इसी तरह जब मैं ग़ुलाम ख़रीदता हूँ तो ग़ुलाम जो है वो मेरी प्रॉपर्टी, एज अ पर्सन मेरी प्रॉपर्टी बन जाता है. इट्स अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप फ्रॉम एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. इसी तरह जिसको हम सर्फ कहते हैं मिडिल एजेस का, जो फ्यूडल पीरियड के अंदर जो खेती बाड़ी किया करते थे लोग, वो एम्प्लॉयज़ नहीं थे लैंडलॉर्ड के, वो लैंडलॉर्ड पे के वैसल ज़रूर थे. वो लैंडलॉर्ड उनको कहता था मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, वो उनका वैसल बन जाता था, और वो खेती बाड़ी किया करते थे, और उसमें से एक हिस्सा रेंट की शक्ल में लैंडलॉर्ड को अदा किया करते थे. लैंडलॉर्ड उनको तनख्वाह नहीं दे रहा, वो जो पैदावार कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा वो लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं रेंट की शक्ल में. तो ये एम्प्लॉयज़ वो ऐसा लैंडलॉर्ड के नहीं हैं, वो उसके सर्व्स हैं. तो ये भी रिलेशनशिप बहुत ही मुख्तलिफ है. इस किस्म की और रिलेशनशिप्स भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. मिसाल तौर पे ईस्ट के अंदर और कदीम ज़माने के अंदर हमारे पास ट्राइबल सोसाइटीज़ थीं, वेरियस हमारे पास कबायली निज़ाम वगैरह हुआ करते थे. यहाँ पे बड़े सग़ीर के अंदर हमारे पास कास्ट सिस्टम हुआ करता था. तो कास्ट सिस्टम के अंदर जो शूदर मेहनत करता था, स्ट्रगल करता था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन करता था, वो कोई एम्प्लॉई नहीं था किसी का. हाँ, वो एक निचले तबके का आदमी समझा जाता था या औरत समझी जाती थी, और उसको अनटचेबल भी समझा जाता था या वो समझी जाती थी, मगर उसको कोई तनख्वाह नहीं दे रहा होता था काम करने के लिए. वो डिवीज़न ऑफ लेबर एक रिलीजियस डिवीज़न ऑफ लेबर पर रेस्ट करती थी और रिलीजन के ज़रिए जस्टिफाई की जाती थी. एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इस किस्म का बिटवीन द कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. सो ये भी बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है. सो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कम्स अबाउट when the relationship between the ruling class and the ruled, the workers and the malikan, transforms in a certain way, and the transformation of that relationship is one in which the working person जो मेहनत करने वाला है वो एम्प्लॉई बन जाता है. वो अपनी मेहनत जो है मंडी पे फ़रोग़ करता है, वो अपनी नौकरी तलाश करता है. ये नौकरी का तस्वर एक नया तस्वर है, पुराना तस्वर नहीं था. जी, लेबर मार्केट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज यस, एग्जैक्टली करेक्ट. आमिना, yes, exactly. This is mercantilism. Merchant capitalism is mercantilism. Merchant is the same. Yeah, but a lot of people in a lot of different courses have said that the roots of capitalism, modern capitalism, lie in mercantilism age. The roots, but not itself. तो वहाँ पे वो develop हुआ, mercantilist age के अंदर वो develop हुआ, and we will study its development. But वो अपनी पूरी शक्ल में तब आया when labor became itself a commodity. What about the labor law, the first labor law that was passed in the UK? Didn't that allow people the ability to? I think it was passed sometime. Well, नहीं, वो तो बहुत बाद में आप बात करें. लेबर लॉज तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करते आए हैं. Definitely then laws had to be created and amended and changed in order to take account of the new realities of a labor market. Right. We're looking at organized production basically. Well, all production is organized in some way or the other, but we're looking at organized production in a way in which the relationship between those who own property and those who work for those who own property is one in which labor power is bought and sold on a market, a labor market as you guys put it. Okay? Yes, sir.
फार्मिंग में भी बात की थी कि जो फार्मर्स थे वो रेंट देते थे ओनर को, जी तो ये वही सिस्टम है जो अभी भी चल रहा है या फिर? नहीं, अब तो ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा ना. अब तो शेयर क्रॉपिंग चल रही है, हिस्सा बटाई चल रही है, और किस्म के बहुत सारे सिस्टम, इवन वेज लेबर चल रहा है एग्रीकल्चर में. बट अभी भी लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे देते हैं. वो शेयर क्रॉपिंग है. अब वो चेंज हो चुकी है. रेंट, सिर्फ महज रेंट अदा करने से ये नहीं साबित होता कि वो पुराना सिस्टम है या नया सिस्टम है. शेयर क्रॉपिंग एक किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है, जो मैं किसी लेक्चर्स में आगे आके समझाऊंगा आपको. एक किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है. इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन सिस्टम from the old system sometimes and from non-free labor into wage labor. Slowly over time, when the peasantry goes from being the traditional peasant to being an agricultural laborer, that transition often occurs through the mechanism of sharecropping, in which rent continues to be paid. We will cover it. जो क्रॉप होती थी प्रोडक्शन, उसके अंदर ओनर का शेयर नहीं होता. नहीं होता था शेयर, बिल्कुल होता था, मगर शेयर क्रॉपिंग के अंदर जो है ना पूरी रिलेशनशिप अब एक मार्केट के सिस्टम के अंदर आ जाती है, विच इज द मेन डिफरेंस एंड चेंज. ठीक है, ओके. इसी तरह हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, बैंक्स एंड बॉन्ड्स. During the US Civil War, that was between 1861 and 1865, the federal government's borrowing demands stimulated development of new techniques of advertising and selling government bonds. So American government began to create government bonds and began to give them out to the public, etc. Europe mein this process occurred earlier. In the last decades of the 19th century, as capital requirements increased, investment banks emerged. Investment bank is different from other kinds of banks. Other kinds of banks make, investment banks are specific kinds of banks that do, that take care of big portfolios of invest them in various places and so on. Equity markets for common stock grew rapidly after World War I. So equity market is basically what we call stocks, etc. So we have bonds, we have stocks, we have investment banking, all this new financialization of the capitalist system which emerges in the late 19th century and in the early 20th century, which we will also study and look at. So, to answer Amina and Awais' question, labor market, unfree forms of labor. Capitalism has also been accompanied by unfree forms of labor, especially in agriculture, in certain periods of its history. But what we have seen is a slow, very slow, centuries of, based on centuries, transformation from non-free forms of labor to free forms of labor. And here are the various stages as elaborated by Carol Heim. Slave plantations of the South, well, they begin really in the 17th century, but 18th century they really take off. ये कॉटन प्लांटेशंस हैं जो कॉटन बना के फिर ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स को बेच रहे हैं. और अमेरिकन साउथ है ये. अमेरिकन साउथ आपको पता ही है, टेक्सास वगैरह ये सारा एरिया. पोस्ट फिर उसके बाद सिविल वॉर होती है अमेरिका के अंदर, जब लिंकन की और यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम की और कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लड़ाई होती है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जीत जाता है. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो स्लेवरी अबॉलिश कर देते हैं. Not completely, but over time it's abolished, etc. As it gets abolished, then those slaves become sharecroppers. Some of them are also family farms, and finally they transition into wage laborers. By the 1920s, we come to a new period of capitalism, often referred to as Fordism. ठीक है, ये हेनरी फोर्ड का पीरियड है और हेनरी फोर्ड का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो डोमिनेट कर जाता है. तो इसको फोर्डिज्म भी कहा जाता है और इसको टेलरिज्म भी कहा जाता है. टेलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था जिसने किताब लिखी ऑन टाइम मैनेजमेंट. तो फोर्डिस्ट टेलरिस्ट अक्सर इसको पीरियड कहा जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि 30s में ही कुछ जगह ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मगर वर्ल्ड वॉर II के बाद तो बड़ी लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म के अंदर कोई एटलीस्ट एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर कोई ना कोई वेलफेयर स्टेट वगैरह इंट्रोड्यूस की जाए. Keynesian demand management becomes more and more common. So that continues roughly till the 1973-80s, and then we see another transition process, which is deindustrialization of the North. What is that? The corporate merger and takeover wave of the 1980s titled US capitalism tilting towards speculative gains rather than on increases in productive efficiency. तो पहली बात तो ये है कि 80s में बहुत बड़े लेवल पे mergers and acquisitions नई किस्म की होती हैं, नए किस्म के financial assets और instruments वगैरह कायम होते हैं. There's a major transformation in the way in which capitalism is working in the 1980s. And you can see the results of that all over the Western world.
कि this is employment share of manufacturing in G7 countries from 1962 to 2008. यानी कितने फीसद एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है, ये उसका स्टेटिस्टिक है. और आप यहाँ देख सकते हैं कि 1960 में ये तकरीबन hovers between 25 and 35%, और फिर देखिए उसका कितना रैपिड किस्म का फॉल है. ये जर्मनी है जहाँ 35% से यहाँ इधर तक आ गई है, 20% से भी नीचे आ गई है. इसी तरह मेरा ख्याल है आई कांट रियली मेक आउट, ये जापान है, ये वाला जापान है, ठीक है. इसी तरह ये फ्रांस है, ये रेड लाइन. इसी तरह ये कनाडा है, आई बिलीव दिस वन प्रॉबली. यूनाइटेड किंगडम इज द ब्लैक लाइन एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज दिस वन हियर. नो, it's this one here. So you can see in every major country that is in the advanced capitalist world, all the 7 major most advanced countries in the world, वहाँ पे the share of employment in the manufacturing sector is decisively falling, especially after 1970s, 1973 to be exact. Question? Acha, question? So, would you say that if you look at the global south around this time, industrialization will be going up? Because In some areas, not necessarily in all, but in some regions, like China, yeah, China, South Korea. like Philippines, like South Korea, Asia. Indonesia maybe, yeah, exactly. So in some areas it is going up rapidly, and some areas it's still continuing to decline. Sub-Saharan Africa is declining because third world is huge. So like even though capital is moving out of the first world and into the third world, it's pushing up certain third world countries, but not all of them. Okay? All right. So finally, capitalism and social classes. What happens when as capitalism develops, what happens to social classes? Well, firstly, the landed aristocracy continues to decline. Yes? Sorry for the question, but what's motivating these 12 countries to decentralize? An excellent question. Deindustrialize. An excellent question. The answer is lower labor costs. As simple as that. You can produce the same thing much cheaper in China. You can produce the same thing much cheaper in Philippines. You're closer to the raw materials. You have large labor power that you can use. Manufacturing labor over here begins to cost a lot. They often have very strong unions, big unions, etc., and you can't push them around so easily. Can we also say that this is also developing the concept of multinational corporation? Yes, multinational corporations have existed for a very long time. East India Company was a multinational corporation. But now these MNCs are moving production from the first world into the third world. That's new. Pehle aise nahi tha. So if production is moving to the third world, what is the first world doing? It's the home of technology. It's the home of the financial sector. Financial sector third world mein nahi ja raha. वो वहीं पे. यानी जो brains और levers of economic power हैं, वो first world में ही हैं. मगर जो पैदावार है, production है, वो third world में जा रही है. Say if we draw a radiograph of the world in this same timeline, Yes. what would your educated guess would be of that graph? Of the entire world, what percentage is, it's a difficult thing for me to guess, but I would guess that it's not declining in this particular way. It may be increasing, but not by a huge amount. उसकी वजह ये है, not as a percentage. उसकी वजह ये है कि third world में population growth भी बहुत है, much higher than the first world. So populations are not static in the third world. So the amount of capital moving into third world brings only very capital intensive jobs, number one. And the third world is huge. The third world is growing rapidly population wise. So overall what's happening to the percentage of people employed in manufacturing, not necessarily that's going up, but it certainly won't be declining as fast as it's declining here. That certainly is the case. That's my educated guess. Yes? Sir, the concept of skilled labor also comes into play. कि जो 12 countries हैं, obviously when they are industrializing, they are becoming more skilled. So they would be demanding more money. So they are rather moving towards unskilled workers. Who is moving towards unskilled workers? जो भी 12 countries में. Well, you look at it this way. I mean, they are retaining certain skills that they think are necessary. But other skills they are saying, ये अब हम advanced skills नहीं, हम third world को भी दे सकते हैं. Take the iPhone for example. It's designed in California, but it's manufactured in China. So the manufacturing they no longer consider to be something that they necessarily want to hold on to or monopolize the knowledge there in any specific way. But जो designing है, उसकी marketing है, उसकी जो actual market है, वो first world ही है.
ठीक है ना, it's a $2 trillion company, more than $2 trillion company. The idea itself has become the commodity. The idea. That's true as well. That is absolutely 100% true. At the same time, now what's happened in the first world is that since manufacturing jobs have disappeared and are disappearing more and more, this trend continues, by the way. What's happening to all those workers that once used to work in General Electric or Henry Ford's की गाड़ियाँ बनाते थे, ये सब कुछ करते थे, वो किधर गए सारे? उनके साथ क्या होता है? वो ले ऑफ्स, अनएम्प्लॉयड, ये वो, घर तबाह, ये वो, फलां फलां. फिर वो क्या करते हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करते हैं. जी हाँ, दैट इज, या फिर वो जेरेमी कॉर्बिन और बर्नी सैंडर्स को वोट करते हैं. ठीक है ना. तो ये एक बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर हमें नजर आता है, कॉल्ड द मे बी कॉलिंग इट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट सो एक्यूरेट, बिकॉज व्हाट्स रियली हैपनिंग इज दैट ये एमएनसीज उन्हीं के कंट्रोल में है, मगर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा है ना, जो डर्टी काम है ना, वो थर्ड वर्ल्ड को भेज दिया उन्होंने. जी. So, but interestingly enough, agriculture is one that seems to. I mean, in the US, there's a huge agricultural industry for wheat, corn, and all of that. That hasn't moved out to the global south, even though a lot of the global south does do mostly agriculture as well. Like Well, Pakistan की तो पैदावार ज़्यादातर agriculture, Egypt की भी to a degree. That's a very interesting question, because the United States may be the exception here rather than the rule, because the United States is a very, prided its, its early industrialization was predicated on the cotton plantations and the cotton that it would supply to the mills of Lancashire, etc. So there was always a huge constituency of agricultural farmers, whereas England, for example, had already outsourced most of its agriculture very early on, even in the 17th century. So different countries react in different ways in this regard, and it would be important to look at that. But generally speaking, agriculture also has become an industry in the first world, in the sense that it's what we call agro-business now. So you have these large corporations like Monsanto, etc., where they have these large tracts of land that can be used for agriculture. There they are using them for agriculture. But that's not their exclusive area for agricultural production. They buy agriculture from all over the world. They do agriculture all over the world. They do it in India, they do it in China, they do it wherever they can find the right and appropriate land. Yes. So speculative gains, speculative gains. Yes. Speculative gains means कि 80s के बाद आप देखें कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक्सप्लोड कर जाता है, जिसको हम फाइनेंस कैपिटल कहते हैं. इसीलिए यहाँ लम्स के अंदर इतने बच्चे जो हैं वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बिकॉज दे ऑल वांट टू गेट जॉब्स इन बैंक्स, राइट. नाउ a generation ago, not as many people were so interested in bank jobs as there are today. और इसी यही वजह है कि आप देखें कि जब भी मैं इंटरनेट पे जाके कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहा होता हूँ या फेसबुक वीडियो देख रहा होता हूँ, तो पहले कोई बंदा आता, हाय माय नेम इज़ साहिल, मैंने 4 दिन में $4 बिलियन कमाए, आज को भी सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है. और मुझे इधर ही पता होता है कि ये बंदा जो है ना, ये मुझे ये कहने लगा है कि फ़लानी ऐप डाउनलोड करो और उस पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर खेलो और पैसे बनाओ. ये मैं बाद में बताऊँगा कि वहाँ क्या चक्कर है. मगर ये जो पूरी फील्ड है कि आप पैसे बनाने का जो तेज़ तरीन तरीका, और यह है तेज़ तरीन तरीका, पैसे डुबाने का भी और कमाने का भी तेज़ तरीन तरीका यही है. ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है. क्यों है, कैसे है, ये मैं किसी और को समझाऊंगा, मगर एक और क्लास में समझाऊंगा. मगर बेसिकली ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है, ये पिछले 40 साल का में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स, डेरिवेटिव मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, और उन पे स्पेकुलेट करना, उन पे ट्रेड करना, करेंसी स्पेकुलेशन, ये एसेट खरीद लो उसको बेच दो, कंप्यूटर पे खरीद लो बेच दो, ये चीज़ जो है ये इतने बड़े पैमाने पर 1980s के बाद इट हैज़ एक्सप्लोडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Also because of certain new ways in which money can be transferred via computers and so on and so forth has made this a lot easier than it was in the past. And so the result, of course, is that speculation plays a very important role in the way in which any economy at any given point in time functions. अब देखो, सब देखते हैं, ओए आपको पता है मूडीज़ ने हमारी रेटिंग जो है वो C+ से B- कर दी है या B- से C- कर दी है. ये सब जो है इस पे जो है वो सोच रहे होते हैं, अखबारों में भी लिखा जा रहा होता है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग को क्या हुआ. तो ये क्या चक्कर है सारा, ये वही स्पेकुलेशन वाला मामला है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना पैसा किधर जाएगा, आगे जाएगा बाहर जाएगा. इसी तरह हमें आजकल हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इस चीज़ से टेस्ट करते हैं कि डॉलर की कीमत को क्या हो रहा है. ओ इसाक डार ने डॉलर की कीमत को दबा दिया, मगर असल में तो इसको ऊपर होना चाहिए था, वगैरह वगैरह. तो ये सारा सिलसिला जो है, अ लॉट ऑफ दिस, वेल नॉट ऑल ऑफ इट बट सम ऑफ इट हैज़ टू डू विद द फाइनेंशियलाइजेशन of the world economy. So we'll study that as well. Okay.
Alright, so finally to conclude, what happens to social classes? تو پرانے زمانے کی جو aristocracy تھی, جو بادشاہ تھے اور جو بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار اور feudal lords تھے, وہ تو more or less ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پاور اب اس قسم کی نہیں رہی جس قسم کی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی جب feudal period تھا. بیسٹ ایگزامپل آف دیٹ از دا فرینچ ریولوشن, جس کی تصویر میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, اور اس کی جگہ کون آ گئے ہیں؟ بورژوازی. بورژوازی کا مطلب ہے مڈل کلاس. ایکچولی اب وہ مڈل کلاس نہیں ہے, اب وہی اپر کلاس ہیں. کسی زمانے میں وہ مڈل کلاس ہوتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پہلے مرچنٹس ہوتے تھے, مینوفیکچررز ہوتے تھے, انٹرپرینورز وغیرہ, کیپٹلسٹ. ان کا کام یہ تھا کہ ایرسٹوکریسی تو زمین سے پیسے نکالتی تھی نا, دولت اس کی زمین پر بنیاد رکھتی تھی. یہ کہاں سے پیسے نکالتے؟ ٹریڈ اور انڈسٹری سے. سو دے آر دا کیپٹلسٹ کلاس. سو کیپٹلسٹ کلاس اوپر آ گئی, اور کون سی کلاس نیچے چلی گئی؟ ایرسٹوکریسی. اسی طرح پیزنٹری جو ہے, اگرچہ اس میں پروسیس زیادہ لمبا تھا, یہ ایک بہت بڑی کلاس تھی اور اس میں کئی جگہوں پہ مختلف پروسیسز رہے, مگر آن دا ہول پیزنٹری کی بھی ڈی پیزنٹائزیشن ہوئی. اوف, موٹا سا لفظ ہے. واٹ ڈز دس مین؟ It means that they were converted to wage laborers. They also became like factory workers, تنخواہ دار مزدور. The fate of the peasantry varied. It was eliminated in some countries like England, but persisted in others like France and Russia. So this is, I think, the question that you were asking as well. That so it's more varied here than otherwise. But overall trend, depeasantization کا ہے. اور finally, creation of a wage-based working class. یہ بڑھنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ میں کام کریں یا وہ سروسز میں کام کریں, دے آر ویج بیسڈ پیپل. ٹھیک ہے, دیٹس ون کلاس آف پیپل regardless of what kind of occupation they're working in. So that has grown. All right, so what are the key concepts here? Please note them down. Difference between markets and capitalism. When did capitalism really begin? How, matlab, what is it that we can say کہ یہ چیز ہوگی تو capitalism آئے گا? What are the two forms of antediluvian capital, and what social classes are weakened or strengthened with capitalism? You don't need to write it down, just look at it. ٹھیک ہے, what are the social classes weakened? یہ key concepts ہیں اس lecture سے. End of lecture.